Okay. Alright, this is what we were building yesterday. So we're done till here. We are adding these inputs and these. This was working correctly. The only issue here is that when you add a, this thing pops up, but something that's messed up here. Um, this gets printed. Okay, this comes from the render function. What happens when I click add new? Um, add new कौन से section में button click add new कौन से section में wait कर लेते हैं add new button click करना होता है under review it is equal to here right this in progress and the area authority. These are the categories that get passed. Perfect. Okay. So like respective button को click करना respective function that's called you have not इधर ही depend हो रहा है we wanted to depend in the right category. Okay. How do we set it up? Button click should activate open. When you click on button click, this runs this function here. Let's say category आती है on the n1 dot depend हम box वगैरह बना के इस box element को create करते हैं यहाँ पे manually text लेके किया तो just to keep it simple and then I just prevent it to 10. I add a condition here the category choose करके prevent करेगा and this will fix the function मैं जहाँ पे add new click करूँगा ये वहाँ पे add करेगा technically it should work. Okay, let's try this then. That one. Am I getting that one? Not the categorized. So this should be this category 22 is equal to the first category. Category category का नाम आ रहा है this category 22 equals to this one right here. And this okay, messed up. This is other than this, so I can do. We need this code. So if category 22 equals to constant one, ये वाली चीज को यहाँ रखते हैं. So this should technically work now because it does, and will similarly create it for the other ones. Else if okay. Else if property 22 equals to in progress, we get this element respectively. Category 20 in progress. Then we do this with a different ID. We were doing for this ID, the ID was 1 here, we'll change it to 2. So this should work. Yes, as expected. जहाँ पर click कर रहे हैं वहीं पर enter हो रहा है. We'll add the same for these two also. Just have to copy this. Change the IDs actually and basically the text where we are adding as we discussed yesterday. So it works here. What happened? It's not working. It's wrong. It works on these two, but it doesn't work on these two. Still should.
then one, then one dot depend, then one dot depend, then dot in HTML. How is this working then? This is not working, it works now. So let me change this to 3. So there is an issue with the ID. Yeah, there's an issue with the ID. You seem to get an error here. What happens when I do this? It prints the array. And so not log array. We don't need this one. Let's try this. Cannot read properties of null reading value. अच्छा क्या issue है? Category is equal to under review. Under review. इसमें क्या गलती? Cannot read properties of null reading value. What are we trying to read the value? Let description is equal to 30.value. Description ला रहे हैं and ये ला रहे हैं. ये दोनों पे काम कर रहा है but इस पे काम नहीं कर रहा. So ये ऐड भी करना चाहिए था इसको. To debug this. इसमें भी यही इशू है क्या? अभी एरर तो नहीं आ रहा. एरर तो नहीं आ रहा. I'll get this. Category अगर रिसीव हो रही है. इसका आंसर रिसीव हो रहा है. कैटेगरी 20 वर्जन है. कैटेगरी यहाँ पे तो नहीं है हमारा. कैटेगरी इक्वल टू आर ए वन कैटेगरी. सीज की कैटेगरी, सीज की हेडिंग, सारी चीजें निकाल कर creates the events. This is for rendering the boxes. This is for rendering the boxes. I don't think this is correct. Hardly wrong. यहाँ पे on click on scan बराबर create open tab provision create कर रहा हूँ. ये वाला provision create कर रहा हूँ. Pen on ID is equal to pen. ठीक है, ID set किया. Spec पर ये content डाल दिया. Category 22 print नहीं हो रहा था. यहाँ पे print करके देख लेते हैं ऊपर. Let's say all category 22. See this. I cannot read the properties of null. What's this? I'll button click. Reading value. Casual. Should it's the exact same. No idea where it's but so if I do this, still doesn't work. Okay, it works now. Okay, there is some issue with the button then because यहाँ click करने से यहाँ वाला ऐड हुआ है, so यहाँ issue नहीं है.
there must be some issue with the button itself. Maybe it's not passing the arguments, the value or argument. Maybe possible. First question I have it. Let's go to the button section. So we have buttons add here. Add name. So we can check the level. Let's check all of these. They अंडर रखिए ये अंडर रखिए वाला ये इन प्रोग्रेस वाला इन प्रोग्रेस पर काम कर रहा है ओके मेक सेंस ये बटन एलिमेंट नीचे चेक करना है और फिर किसी चीज अंदर देखिए strong with this it's the same it's the same and container left the container head left the review this is for the head this doesn't matter if you just minimize this this is for in progress this works perfectly but so इस चीज को यहाँ कॉपी कर देंगे क्या होगा this should work as it does now all of a sudden this is broken just we are passing the in progress thing here I'm getting an error from here ID 3 काम कर रही है 2 काम नहीं कर रही है जबकि दोनों में ही in progress दे दे रखा है ऐसा कैसे हो गया ये जो कैटेगरी पास भी है ऐसे में अपडेट होना चाहिए राइट इसलिए कैसे अपडेट हो अगर कैटेगरी अपने पास करें मैं चेक हो रहा है इन प्रोग्रेस सारे इन प्रोग्रेस लेकर रखा हूँ अच्छा ठीक है शायद इस पे काम गड़बड़ हो जाए I think this was the issue. I did not pay attention. This was pretty simple, I guess. Finished. So this should work and this should not work because यहाँ पे मैंने सेव कर दिया सबको in progress मोड़ दिया in progress पूरी वाले की तरफ से बटन है इसके अंदर 2 नंबर के अंदर बटन फ्रेम के अंदर होना चाहिए इन प्रोग्रेस सही है तीसरे के अंदर होना चाहिए अंदर रिव्यू so this works now something is wrong इधर से भी इधर आ रहा है इधर से भी इधर ही आ रहा है तो this works fine एक ही इशू है इससे इधर आ रहा है लेकिन इससे भी इधर ही आना चाहिए यहाँ से सही रिव्यू मतलब सही आईडी पास हो रही है 3 से अंदर रिव्यू पास हो रहा है लेकिन होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इशू है क्योंकि पे 1 इन प्रोग्रेस में 3 ओके दिस इज द इशू यहाँ पे होगा नाउ दिस शुड वर्क यहाँ से यहाँ ऐड हुआ यहाँ से यहाँ ऐड हुआ यहाँ से यहाँ पे so that's fixed इन दोनों ब्लॉक्स को मैं हटा दूं तो कोई जरूरत तो नहीं आदमी अच्छा आदमी को डिसअपीयर भी करना आदमी को डिसअपीयर करना टेम्परेरी डिसअपीयर ठीक है इसको किस तरीके से हम फ्लो रख सकते हैं कि आदमी जब बने तो जो बॉक्स है जब मैं
ये disappear भी हो जाएगा वाला button. And then you start to render the button, and then when I click on add the value, see if you can add values here. So it does out of this. Is it not working or something? Study chemistry. Confused हो गया मैं कैसे करना कौन सा है just have to study my own code again. ये तो स्ट्रक्चर है ऊपर का this doesn't really matter. सबसे पहले पार्ट है ये वाला बटन ब्लैक बटन जो चैनल में ऐड कर रखा है ये पास कर रहा है रिस्पेक्टिव फंक्शंस को अपना ये सेक्शन में से और ये बॉक्सेस ड्राइवेबल हैं ठीक है बस नए बॉक्सेस भी ड्राइवेबल हैं सारे बॉक्सेस ड्राइवेबल हैं और ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे करके चेंज कर दी टाइप इज होल्डर एक क्लास ठीक है यहाँ से ड्राइवेबल बनता है चीज़ों perfect. ये भी बेस में हटा देता हूँ बस इसमें जरूरत नहीं why does this render this it does not wait for a value to pass इससे मैं render कर रहा हूँ button click से button click should wait for an input and then render it so that's the issue so this will so ये study chemistry ये डेटाबेस में जो दिया था उसी से रेंडर करें इसीलिए रेंडर फंक्शन कॉल हो जाएगा जब मैं ऐड कर रहा हूँ तब ये पुराने वाला सिस्टम से सही है ठीक है आज हम जाते हैं बटन क्लिक पे बटन क्लिक यहाँ पे हमें चेंज करना है कि हम ये रेंडर फंक्शन यहाँ डायरेक्ट रन ना करें ये क्लिक होने के बाद ये रेंडर तक चले जा रहा है प्रिंट्स दी अदर आउटपुट सो लाइक वी टेक फॉर एन इनपुट इसके इशू ठीक है इसका सॉल्यूशन क्या है click on add fill out the box and wait for an input ये add से नया फंक्शन कॉल होगा तो इस फंक्शन में क्या क्या होगा रेंडर तो नहीं होगा ठीक है ये वाला फिक्स हो गया यहाँ से अगर मैं ये करूँ और कंसोल का लॉक करूँ कंसोल लॉक what's the name of it इसमें 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं इन प्रोग्रेस के अंदर अच्छा ये पांच ही कैसे जनरेट हो रहा है Did I do something? Let's check it out. We add something here. Why does this generate a new box? Add करने के बाद अच्छा ये दोबारा makes sense. Let's see it on यहाँ 3 ऑब्जेक्ट्स होगा हमें चाहिए 2 लेकिन मेरा वाला डेटा भी पास नहीं होगा ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि हमने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं किया अभी तक हमने इतना किया कि ऐड नहीं बटन दबाने पे सबने क्लिक कॉल है बटन क्लिक किया एचटीएमएल बॉक्स क्रिएट कर दे जो कि ये वाला बॉक्स हमारा जो कि काम कर रहे हैं और कैटेगरी के हिसाब से सही जगह पे इसे अपेंड कर देंगे जहाँ पे क्लिक करा वहाँ पे अपेंड कर इस वर्किंग फाइल पे किया इसके बाद क्या हो रहा है कि मैं क्लास के ऊपर ले रहा हूँ
ये यहाँ पे नहीं करना, बटन क्लिक होने के बाद तो यहाँ पे कितना ही होगा, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से अब ऐड नहीं होना चाहिए सर, डिलीट शर्ट्स के राइट्स बटन क्लिक कॉल करके वो बंदा क्या करता है, बटन क्लिक को 2 बार फिर से कॉल करता है। ऐड करने का नया डिपेंड का सर ये कहाँ से बड़ा डिपेंड करेगा, यहाँ से बटन क्लिक हो रहा है अगर हम क्लिक कर रहे हैं, इसके बाद बटन क्लिक रन होता है कैटेगरी के साथ, एलिमेंट्स करते हैं। ऐड करने को क्या होता है, इसको फंक्शनैलिटी तो मैंने नहीं दिया है, मंथली विजिबिलिटी, अच्छा यहाँ से कट कर दिए से दोबारा कॉल करना, we have to run this function here so that we just remove this on click, this should fix the issue. It wouldn't create any more bits now. Instead, what we should do is बटन क्लिक है तो ऐड नहीं बटन को ऐड बटन क्लिक बना इस पे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, इस पे क्या होगा इनपुट बॉक्स में अगला फंक्शन की इनपुट ले, तो ऐड क्लिक होने का इनपुट ले एंड अच्छा we should also need to remove this admin from here. We need to remove this admin temporarily. Okay. So where does this admin exist? इसको position को हटा दें. यहाँ पे है admin class is equal to black button. अच्छा आईडी का ब्लैक बटन हटाना पड़ेगा, ये कैसे करें, बटन को हम आईडी दे दे तो किया जा सकता है, राइट, लेकिन से बटन को हटाना ये कैसे पता चलेगा, ये ऑलरेडी हैव की कौन सी आईडी से ये कॉल हुआ है, उस आईडी के अंदर वाले बटन क्लास को डिलीट करना है टेम्परेरी। अच्छा अच्छा पेरेंट एलिमेंट से हम डिफ बता सकते हैं, तो हम रिस्पेक्टिव आईडी वाले से डिफ को हटा देते हैं, तो हमें आईडी भी पास करनी पड़ेगी, फिर आईडी भी पास करनी पड़ेगी, बट वो कर नहीं सकते। I think we can the button क्लिक पे ये हो रहा है, इसके पेरेंट की आईडी पास what if we just pass the ID of the button instead, इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अगले फंक्शन के लिए, शुड बी दैट यहाँ पे हम बटन के लिए आईडी सेट कर देते हैं, ये 4 बटन हैं, for example let's start with the first button. The first button is here in the container के अंदर ये है, बस इस नई में से आईडी D1 फर्स्ट पे जाएगा तो बाकी का भी पेस्ट कर देंगे, तो जब हम यहाँ पे आईडी असाइन कर रहे हैं तो इसमें से स्ट्रिंग हम पास कर देते हैं इसकी आईडी, ठीक है। अब बटन क्लिक फंक्शन में जाता है, बटन क्लिक फंक्शन में कैटेगरी आ रही है, बटन आईडी भी आ रही है, बटन आईडी भी आ रही है। अब इस बटन आईडी को हमें यूज करके ऐसा करना है कि जब हम ऐड क्लिक करें तो बटन क्लिक पे इस आईडी
कि पेरेंट में से डिलीट करना अगर एक्सट्रीम वगैरह का डिलीट कर दो तो मीडियम ट्रिक में ठीक है but before the arrangement have to remove the text from the parent element. So button ID, button parent ID should make a button parent ID and instead of passing v1 we should just pass one the ID of the parent element which is this here. ताकि इसका ये तो इसी का पेरेंट है इसका पेरेंट तो जो भी है तो इस पेरेंट में से अगर हम ये एक बटन डिलीट कर दो तो फॉर्म हो जाएगा इमेज चाइल्ड है ठीक है तो बटन क्लिक है यहाँ पे बटन क्लिक है यहाँ पे इसके बाद क्या कर सकते हैं हमें आईडी आ सकता है हमें पेरेंट एलिमेंट ढूंढना है आईडी से तो इसको लास्ट में करना होगा राइट एक बार हमने प्रिपेंड कर दिया इसके बाद अच्छा अगर हम रिस्पेक्टिव रो यहीं से चूज करें फाइल को यहाँ तक हम एक्सेस करते हैं हाँ हमें ये पास करने की जरूरत नहीं we can add it here itself. Temp one is the parent element, so temp one dot delete child or remove child of child take your child remove child okay proper remove child does this remove the button no doesn't remove child how do you remove child just remove child ठीक है पेरेंट का remove child अच्छा चाइल्ड की भी आईडी देनी पड़ेगी अच्छा चाइल्ड की भी आईडी लगेगी does it have to be necessarily an ID and we do it without an ID if we can what if the child does not have an ID what do we do with that case remove child first child okay so the company आईडी चाहिए होगी तो बटन की आईडी दे देते हैं वापस मुझे सेट कर फर्स्ट वाले पे हमने यहाँ सेट करी थी we'll just define the ID ID is p1 here we don't have to pass it but we still need it so it's we just change यहाँ पे बटन से b1 it should work I didn't fail to execute remove child on hold parameter 1 is not of type cancel one dot remove child ID ले रहे वन वाले की इसमें से remove child कर रहे हैं b1 को ID ले रहे हैं वन तो इसको remove child कर रहे हैं b1 को this should have worked that's exactly how this defined here ID parent ID child और यहाँ पे parent is first में लाया child first में लाया child की ID से अच्छा क्या करेंगे ID child अच्छा नहीं इसमें एलिमेंट को कॉल किया okay that's not how you remove it you first have to get the element and then remove it okay makes sense so click button click
very tired today. Okay. Will be button then to 2 is equal to get element by ID, get element, get element by ID. The ID we're using is P1 child that this should work. See, this did not. So, get element by ID is not defined. Okay, अच्छा, it's not defined. Not defined. Just define it. Not defined. Get element by ID option. Creation of function method by get element by ID. ID is P1. Okay. Get element by ID is not defined. अच्छा document dot get element by ID. Release equal to 9. Document dot get element by get element by ID. Yes, this should work. Reset button. परफेक्ट तो हमें यहाँ पे पास करने की जरूरत है इस चीज को हम डाल देंगे मार्केट expected buckets के साथ and we'll just change the ID numbers ताकि document create हो जाए E2 E3 just make sure कि जो button ID है उसका एक से बदला remove shell parameter 1 out of 5 अच्छा even दूसरी दूसरी तीसरा हमने डिफाइन नहीं किया ठीक है यहाँ पे and short code button पे कर गए ID को show देखना it does under review ये कहाँ से होगा ये कहाँ से होगा I don't know. So this works now. Spirit has Java. We also have to add it to the current information. तो उसी में वहाँ पे ऐड करेंगे. ये भी तो सेटअप करना है. एरे वाला. तो यहाँ से एरे में ऐड नहीं हो रहा है. Expect this. Console.log by the 20 array to this is just the default one study chemistry default one and all the initialization and this is not functional yet okay it's not functional yet let's make it functional first then we'll render it back it would be the best तो यहाँ पे जो बॉक्स क्रिएट हो रहा है हमने HTML से रिपीट किया स्ट्रिंग डाल के यहाँ पे बटन इज इक्वल टू अच्छा add next को कॉल करेंगे तो इसका काम है add next का काम है वैल्यू ऐड करना बॉक्स को हटाना इसको एंटर करना एंड
contents को चार चीजें संदेश next function इसी यहाँ पे error आना चाहिए function define हाँ सही है unexpected string unexpected string शायद इसे डेल करना पड़ेगा add next function define कर देते हैं add next shouldn't give us any error anymore unexpected token which is unexpected string of HTML क्या है add next अच्छा makes sense add next this should be fine it's wrong add next is not defined perfect this is exactly how it should have been let's continue function add next here we'll be defining our function कि यहाँ पे add click करने पे क्या होगा console.log running it should work for all of these क्योंकि इनका एक ही प्राइमरी काम है वैल्यूज को ऐड करना डिस्क्रिप्टिवली पुश और पॉजिटिव फ्लो की कौन से वाले में हम किया इसलिए उसको आगे सेटअप करेगा डेटा को पुश करने के लिए डेटा को पुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स कहाँ जनरेट हो रहा है कहाँ जनरेट होता है देखो इसके अंदर है I think so there will be a Vanessa point new create कर दिया ये रखा बॉक्स Vanessa को ये बॉक्स से डेटा ये हम कैसे चलते how do we do this से डेटा कैसे पुल करना अच्छा यहाँ पे हमारे पास स्प्रेड करें हटा देता यही बॉक्स से ऐड हुआ था पहले ये वो वाला बॉक्स है ठीक है इसमें मेन चीज देखने वाली है कि अपेंड कहाँ हो रहा है क्लास इक्वल्स टू बॉक्स I think इसके अंदर बॉक्स क्लास ढूंढने से हो जाएगा इसके अंदर में ढूंढे कैसे इसके अंदर का इनपुट्स में ढूंढे कैसे that is the main issue so ढूंढने के लिए थोड़ा सेपरेट टिप्स जिस टेस्ट में ये क्रिएट हुआ है सेपरेटली हम उसको एक आईडी बना देते हैं लेकिन आईडी बनाने के लिए you cannot just add a box so how do we make sure we're adding it in the right place जहाँ से हम ये ऐड करें उनका ऑथोरिटी भी सेट करना पड़ेगा so we're doing it from here
we are doing this now. We're creating this box and then we're appending it. One. For the HTML. Then that append temp अपने आप में क्या है div है इस वाले div का class name हम set कर देंगे by ID of the group R1 R2 R3 R4 and then we can operate it like find the data like that R1 R2 R3 R4 करके save कर देते इस बंदे को तो temp में हम class name डालते हैं step 1 step 1 temp this is student name right so temp पे हम ID set करते हैं temp dot class name is equal to temp dot ID set करते हैं dot ID equals to R1 similarly for the other ones इसको बाद में करेंगे so remember we did this here yeah I will do now okay ठीक है category बराबर PD then की ID हमने set कर दिया once we have set the ID for this फिर की दो next is कि इसके IDs दोनों डेटा हमें यूज करना है तो कौन सा फंक्शन हमने नया बनाया है अभी add next को काम है by IDs बंदे को ढूंढना इसके अंदर के टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यूज को निकालना ठीक है तो when we get this ID dot get element by ID element by ID the ID is going to be v1 so const def element the value is equal to ठीक है element के बाद console dot log print करके देख लेते हैं कि सभी एलिमेंट आ रहा है या console dot log table just save function here you need this this is the character so we don't know स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या एक और डेटा एक और डेटा है जिसका टेक्स्ट बॉक्स ये 0 और 1 करने से हो जाएगा 0 और 1 करके हो जाएगा add next को कॉल करके हमने element by ID आएगा console dot log इसको लॉक करने के बाद हमें इसके दोनों पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे इनपुट और डिस्क्रिप्शन const पहले तो सीधा बताते const input is equal to title const title is equal to document dot query select all में हमने दो document के अंदर select all इसी चीज के अंदर कैसे सर्च किया जाए इसी चीज को अंदर कैसे सर्च किया जाए और फिर बड़े जगह आईडी दिया जो बॉक्स की आईडी थी वो मैं दे दूंगा तो क्या होगा R1 hashtag R1 hashtag R1 का 0 मैं यहाँ से कमेंट करेंगे how do we do this तो ये की आईडी दे देता हूँ अपवर्ड दे और ये से नाम इधर से लेने का पड़ेगा
if you have a specific condition, right? Not necessarily, not necessarily people are just I just continue this tomorrow.